हाय फ्रेंड्स मु रजत स्वागत करछि आपनको मो चैनल बैंकिंग विथ रजत रे। देखंतु पिला माने आज इंडियन पॉलिटी रो किछि क्वेश्चन देखिया जाकि ओपीएससी एएसओ एवं ओडब्ल्यूएस पे इंपोर्टेंट न्यू प्रैक्टिस सेट रहिछि सेट नंबर 3 जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कशन करिवा स्टार्टिंग करिया तापर जदि आपण चाहूंते अन अकाडमी माध्यम रे ऑनलाइन क्लास करिवे घर बसी आपण क्लास करि परिवे हम एएसओ पई ओएस पई ओडब्ल्यूएस पई बहुत गुडी बैच को स्टार्ट करिछु ए सबुद्र आपण जॉइन करी मध्य क्लास करि परिवे केମିତି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ଲର୍ଣ୍ଣର ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପିଏସସି ଗୋଲ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଏସସି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଓପିଏସସି ଗୋଲ୍ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଦେଖିବେ ମୁଁ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି 3 ମାସ 6 ମାସ 12 ମାସ 24 ମନ୍ଥ ଯେତିକି ଦରକାର ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। एटा मो रेफरल कोड ए कोड आप यूज कर डिस्काउंट पाई परिबे नाइ तो ए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मध्य मु डिस्काउंट लिंक शेयर कर दिछि तापर क्लिक करी मध्य जॉइन करि परिबे। जहाँ भी डाउट अछि आपण ए नंबर रे कॉल करी एसएमएस करी बुझी परिबे हाउ टू जॉइन ऑन एकेडमी फॉर ओपीएससी ओडब्ल्यूएससी वा एसओ एग्जाम। तो क्वेश्चन जे हम फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म सेक्युलर वाज एडेड इन द प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे सेक्युलर वर्ड ऐड हैला को अमेंडमेंट एक्ट अनुसार बेसिकली द अमेंडमेंट एक्ट 1976 42 अमेंडमेंट एक्ट अनुसार सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया सोवरेन कंट्री सोशलिस्टिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एश्योरिंग इट्स सिटीजन जस्टिस इक्वालिटी एंड लिबर्टीज। सोशलिस्टिक एवं सेक्युलर इंटीग्रिटी तीनटा दिन सारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट अनुसार व्हिच फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स आ विदु कोटा गोटे फंडामेंटल राइट्स नुह। राइट टू प्रॉपर्टी उठी गला पिला माने राइट टू प्रॉपर्टी उठी जाई कि गोटे हमर ये गोटे गला लीगल राइट हे गला राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट आर्टिकल 300 ए अनुसार व्हिच फॉलोइंग रीड्स ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज sought to get an order of an authority quest mandamus certiorari querento habeas corpus। answer of certiorari means civil equality implies civil equality माने कौन equality of opportunity is a political ideal that is opposed to caste hierarchy but not to hierarchy per se। the background assumption is that society contain hierarchy more and less desirable support superior and inferior position। तो एठी हमें इक्वालिटी मीन्स एठी सिविल इक्वालिटी मीन्स एठी हमें कहि परिया पिला माने सिविल इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ कंट्री व्हिच फॉलोइंग वर्ड preamble of the constitution India which was not inserted through the constitution 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 अनुसार को जो तीनटा आड हेची आमे गोटे आड हेनी डिग्निटी आड हेनी सोशलिस्टिक सेक्युलर इंटीग्रिटी तीनटा आड हेची डिग्निटी आड होई नाही। इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और redefine the boundary of a state। इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और redefine the boundary of a state a simple majority absolute majority 2/3 of majority of the member voting 2/3 of majority of the member voting and absolute majority of its total membership। आंसर of a simple majority माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन which is a source of political power in India which is a source of political power in India। आंसर of we the people of India people la source political power source la people। which one of the following is a political rights आ विदु कोडा गोटे political rights होते right to contest election is a political rights। fundamental rights in India as guaranteed by its through dash fundamental rights of in India are guaranteed by its 19th question। आंसर of 3 right to constitutional remedies which following reads of the high court or supreme court
is sought to produce in the court a person suspected to be missing in custody. Answer about habeas corpus. Habeas corpus means you must present the person in court. Habeas corpus अर्थ होची पिला माने you must present the person in court. It is a writ or legal action which require a person under arrest to be brought before judge into court. जहाँ को अरेस्ट करे ताको जज पाखे आनी रख. This ensure that a prisoner can be released from unlawful detention. In other words, detention lacking sufficient cause or evidence. एटी आपन आंसर अब 3 हाबिस कर्पस. बुझला पिला. Which of the following bills the president must accord his sanction without sending it back for fresh consideration? Which following bills the president must accord his sanction without sending it back for fresh consideration? कौन bills? Answer money bills. Money bill are those that classified under Article 110 Part A of the Constitution India. Where in Indian Constitution has the economic justice been provided as one of its objectives? Mental right, directive principle, fundamental rights and directive principle. Do you have a directive principle? Which of the following is not enumerated as rights in the Constitution of India? Answer of political economic rights. अर्थनैतिक अधिकार मेंशन होइनी संविधान राइट्स रे. Who is following is not mentioned in the preamble? Justice, fraternity, equality of position, adult franchise. এটা কোটা হবো adult franchise. এইটাই আড়ে হবে. এটা হইনি বাকি সব হইছে. The Indian Constitution recognizes minorities of the basis of. कौन बेसिस रे भारत संविधान माइनॉरिटी काउंट करता है? रिलीजन, कास्ट, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कलर. कौन बेसिस से? Actually, there is only one article pertaining minorities. Constitution Article 30 of the Constitution provides all minority, whether based on religion or languages, shall have the rights to establish and administer educational institution of their choice. The Constitution thus envisages that minorities can be based on religion or languages. Minority identified on the basis of percentage of population of the group of total population. Writs of mandamus can be issued by Supreme Court to dash. Supreme Court issue करता है mandamus काको? The official to perform duty. The official to perform duties, public duties. Option number 1 कहो ठीक. How many fundamental duties are included in the Constitution? केतेटा फंडामेंटल ड्यूटी आड़ होची 11 टा. फास्टली 10th ला 11 हैला 2002 अमेंडमेंट एक्ट कौन 28 रो क्वेश्चन. द राइट्स टू वोट इलेक्शन पार्लियामेंट को राइट्स राइट टू वोट इन इलेक्शन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स? आ भितर कोटा गोटे राइट्स नो. राइट टू प्रॉपर्टी उठी जाइछि या बने. फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. को कंट्री इंस्पायर होइकरा में फंडामेंटल राइट्स कानिछु? आंसर हो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इश्यू रिट्स ऑफ
habeas corpus is vested in dash. तीनों both Supreme Court and High Court. Which of the following is a bulwark of personal freedom? Which of the following is a bulwark of personal freedom? Answer of habeas corpus. The writs for enforcement of fundamental rights are issued by dash. Article 3 the Supreme Court. Evaluate the following statement. A statement को हम evaluate करिया. Legal interpretation of equality is chiefly influenced by equality before law and equal protection of law. Equality before law means rule of law. Adru कोटा correct. Both are correct. Writs issued by the Supreme Court compelling a quasi judicial public authority to perform its mandatory duties dash. Writs issued by Supreme Court compelling a quasi judicial public authority to perform its mandatory duties dash. Answer of 2 mandamus. Which the following modes can citizenship be acquired? को मोड रे citizenship acquire करता हो? बात हियरटारी registration 3 टा हबो एठी तो ऑप्शन नंबर 2 हबो 1 2 3. In which of the following cases Supreme Court held that fundamental rights are unamendable? को केस रे सुप्रीम कोर्ट कहला जे फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट करा जाय परिबो नहीं अनअमेंडेबल. 37 नंबर 2 केशवानंद भारती केस. Deity principle is in our constitution or dash. Non-enforceable in the court of law. Which following expression does not figure preamble to the Indian Constitution? Answer of 4 federal. Right to property was removed from a list of fundamental rights during rule of dash. कार रूल समय राइट टू प्रॉपर्टी उठी आइथिला. आंसर हो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जनता पार्टी गवर्नमेंट. द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स बट ड्यूटीज इंक्लूड ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल व्हिच इंस्पायर आउट फ्रीडम मूवमेंट. व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द Deity principle of state police? Answer हो 3 part IV. How many type of writs can issued by Supreme Court? How many type of writs can issued by Supreme Court? Answer हो 3 5. The preamble of our constitution reads India as a dash. Preamble of our constitution reads India as a dash. India sovereign, socialistic, secular, democratic republic. India. Who is the guardian of fundamental rights enumerated in the Indian Constitution? 45. आंसर एक सुप्रीम कोर्ट. इतला पिला मन आपनकर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 3 सॉरी सेट नंबर शायद 4 बोध हो बेटा कना 3 सॉरी जाई छी एटा होछ आपनकर 4.
এটা আমাকে 4 হব সেট নম্বর 4 3 সরি যেটা 4 হব। থ্যাংক ইউ।